It's a new day and I'm back with my daily code log. It's day 40 and I am here accountable for my progress. I feel positive and I feel I can do all of the problems I decided today by myself without any hint. Great. Okay, so today we are going as follows: 1, 1100, a 1200 and a 1300 in sequence, and I've chosen the problems already. Okay, great. Okay, so without wasting any more time, let's get started. I don't see any extra things. Great. Gain is set, CPU is at minimum load, and we are streaming. All right, great. So here's the problem. That's 1100 I've chosen already. Today is 21 January. Okay. Let's start the timer. 50 minutes strict timer. Timer has started. Let's call an array B beautiful. Okay, let's do with the constraints. And is 1000. It's small. Okay. And square is possible. And A is 10 to the power 6. There is an array. For each test case, output one integer, the minimum number of operations needed to make the array A beautiful, or -1 if it's impossible to make it beautiful. Okay. Beautiful. What is beautiful? We are given array B is beautiful if it consists of at least 2 elements and there exist कम से कम 2 element, more than 2 elements possible. At least 2 elements and there exists position I such that bi minus bi plus 1, the current minus the forward, and its absolute is taken, is less than 1, less than equal to 1 या 0 हो सकता है, where negative भी negative तो not possible, 0 या 1 होना चाहिए, दोनों के बीच में difference. Okay, you are given an array A. Given an array, as long as it consists of at least 2 elements, you can perform the following operation. कम से कम अगर 2 element है तो you can perform the following operation. Choose 2 adjacent position I and I plus 1 in the array. करें एक पोजीशन लेना है, उसके आगे वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. Choose an integer x such that एक इंटीजर चूज करना है जिस min of these two is less than x and x is less than max of this. So remove the number itna and itna from the array and insert the number x in their place. Obviously the size of the array will decrease by 1. We know that the size of the array is decreasing. Okay. So a element, okay, दो indexes basically adjacent choose करना है and number x choose करना है that is less than the maximum but more than the minimum.
या मिनिमम के बराबर भी हो सकता है, मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है। तो ओके, you have this range of selecting x min to max and remove both the elements from the array and insert x. तो दो हट के एक हो जा रहा है and obviously the size of the array will decrease by 1. okay, in their place. okay, position matters, उस उन दोनों के i के जगह पे जाके बैठ जाएगा. Calculate the minimum number of operations required to make the array beautiful or report that it's impossible. Okay, for example we have this 1 3 3 7. okay, and just बस इतना ही. इसका साइज 4 है, तो जिस बगल वाले एलिमेंट्स और करंट वाले एलिमेंट में डिफरेंस 1 या 0 होना चाहिए. बेसिकली एक बड़ा होना चाहिए या तो सेम होना चाहिए. सेम है तो गुड. तो व्हाट वी कैन डू इज ये दोनों को चूज करके 3 बना सकते हैं. दोनों को चूज करके इसको 3 बना सकते हैं, इसको भी 3 बना सकते हैं. हो गया. डिफरेंस 0 हो गया. अगर 4 है तो छोड़ सकते हैं. 2 ऑपरेशन लगेगा. 6 और 9 में एक ऑपरेशन लगेगा दोनों को सेम करने के लिए. उसके बाद इसके बाद 3 1 3 7 में ये लोग बगल में नहीं है बट कैन बी हेल्पफुल, राइट? सो वी कैन मेक 3 आउट ऑफ इट. 2 ऑपरेशन इसमें भी लगेगा. 2 1 2 एंड फोर्थ वाले में 1 3 5 2. सो 1 1 3 1 2 3 and 5, which can be a kind of help if they are arranged in a certain way, but यहाँ arrange नहीं है. So we can make just 2 elements 1 के बराबर. इसको 1 बना सकते हैं और इसको 2 बना सकते हैं. 2 ऑपरेशन में काम हो जाएगा. वो so first we don't need any operation, then a -1 and 1 1. okay, interesting. so 6 9 जो है 2 एलिमेंट्स है. और एरे में 2 एलिमेंट बचना चाहिए. अगर 2 एलिमेंट बचा हुआ है तो you can just, if 2 elements left, you can just check for good or not. No operation. ठीक है, not good, cannot be made good. ऊपर वाले में 1 3 3 7 है. 0 ऑपरेशन में गुड हो जाना चाहिए. In the first case, they are given an array is already beautiful because 2 minus 3 goes to already beautiful. Let's call an array be beautiful. It consists of at least 2 elements. कोई भी पोजीशन अगर तो किया जा सके ऐसा, इट विल बी ग्रेट, राइट? तो फिर एक ऑपरेशन में तो सबको निपटा सकते हैं ना. दिस इज ऑलरेडी गुड, दिस कैन नॉट बी मेड गुड. जस्ट यहाँ 3 लगा देंगे तो हो जाएगा एक ऑपरेशन में, और यहाँ एक 2 लगा देंगे तो हो जाएगा एक ऑपरेशन, राइट?
A2 and A3. मैक्स एक ऑपरेशन लगेगा किसी को भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और but is there any catch? Okay, I have like this is I don't have any proof for that, so let me find out a case that can break this assumption कि एक में नहीं हो सकेगा. I'm saying that कि अगर दो है तो do this, and else already good, then great, else just output 1 1 3 5 2, या जैसे कि एलिमेंट का साइज हो सकता है 2 3 3. This is already good, 0 operation. 3 3 3 3 0 operation, 1 2 3 4 0 operation. At least 2 elements, कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, और देयर एग्जिस्ट अ पोजीशन आई, ऐसा पोजीशन होना चाहिए दोनों का डिफरेंस जो आएगा कम से कम लेस देन इक्वल टू 0. सेम होना चाहिए, एक बड़ा छोटा कुछ भी चल सकता है. I don't think this is any catch here. There is any catch. Okay. So what I should do is कहीं भी तो हटा के just can match it, right? If it's already not matching, then one operation is enough. But one operation is not enough if the element, like in 3 5, you cannot set it to 2. You can set it to 3 but not set it to 2. तो अगर 2 और 3 के बीच में एक गैप है then ठीक है, तो वो एक गिना जाएगा. बट अगर 3 और 2 के बीच में, let's say I had 7 and 9, then इन दोनों को रिमूव करके 3 बनाया जाता है, इन दोनों को रिमूव करके 3 बनाया जाता है, then 3 2 3, तो 2 ऑपरेशन लगता है. तो distance between them, right? Okay, so मिनिमम ऑपरेशन बोला है ना, एक टिक मिनिमम 0 हो जाएगा. दिस ऑल्सो और एवरीथिंग. if I'm not finding anything -1, okay, if I'm finding it in like this 1 and पूरा ऑपरेशन पूरा करेंगे n स्क्वायर में, इससे मिनिमम डिस्टेंस, इससे मिनिमम डिस्टेंस, that's why it's n square. Great. Now from here I can just check कि +1 या -1 कोई है, and I just get the distance between these two positions. That's fine. This will hold. This will hold. Okay. Let's code it up. Before coding it up, I should write a pseudocode. So this is a for loop that will go from int I equals to 0 to I less than n, I plus plus, right? And it will be the current number, right? In curve will be vi. Now there will be a for loop that and j equals to, that will start from I just want to know anything that's, you know,
Yeah, it can be far. I can reduce the distance, right? तो 0 से शुरू करेंगे, j less than n and j plus plus करेंगे. If int des equals to vj abs of vj minus कर. If this is less than equal to 1, then update minimum of mini comma this, right? Done. Let's move to coding. ये कल का बचा हुआ कोड है. 1300. It was a good solve. You just get in n and the array that will be of size n, and just read it. Okay, so 0i less than ni plus plus. Okay, now int कर का भी ज़रूरत नहीं है. Okay, equals to absolute of vi minus vj. If this is less than equal to 1, then we update mini equals to min of mini, and this if mini equals to infinity, then cout -1 new line, else cout mini new line, int mini equals to infinity because mini. Okay, just let me get the test cases. Oh, great. Let's see how this works. Whoa, there's a thing here. Okay, typo. What is the answer? 0 minus 1 1 1. Skip. The current position. Don't serve this. Okay. What is it? But we want just a minute. I have a call.
So I have a situation here. I'm not getting one that I'm supposed to get here. I'm getting 0. So if it's 3 and so distance, the value is not the distance. No, it's wrong math. The difference is good. If this is the difference, okay. If the diff is good, then the distance will be, if diff is less than equals to 1, then the distance will be, j is always ahead, right? So like this thing, 0, 1, 2, 2 and 0. So absolute of j minus I minus 1, 2 minus 0 is 2 minus 1. This is the difference, and this is the distance will be the gap between those indexes. So I think I need a clever one to this equals to max of I comma j minus min of I comma j minus 1. So this will be the distance. So if you have 0 and 0, 1, 2, 3, 3 minus 0 is 3, 3 minus 2. I think that's great. Let's submit.
got stuck. $54th. Found one. How do I get the test case? 54th test case. -1. Wasn't expected. Expected 1 and found -1, right? We have to clean this. Distance cannot be negative. I did some corrections. Let's see. Let's see if this works. It's been 25 minutes. Are there any situations when minimum
You have negative numbers. Oh, like if we used a number, um, we don't have access to it. I think I didn't handle that. Something related to that or what? See. Mm. If something is used, it cannot be used again, right? एक ऑपरेशन में क्या करते हैं, पूरे सेट में जाते हैं, मल्टी सेट में, और खोजते हैं डिस्टेंस. हमको एक ही तो चाहिए. आई डोंट वांट टू रिमूव ऑल ऑफ देम. एक ही ऑपरेशन ही चाहिए. So going through all of the elements, I want. अरे यार, minimum is infinity. If it's the same number, right? Keep it. Move to the next step. मिनी इज इन्फिनिटी मतलब कि ऐसा एरे जो कि कभी भी नॉट टच मिनी, राइट? All the elements have a gap of more than, तो जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, 9. Now देखेंगे कि ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें हम वन ला सकते हैं क्या किसी को भी, या 2? उसके बगल वाला को भी देख सकते हैं. इफ ठीक है,
So in this case, you cannot update the number to anything. 13579. इमीडिएट कोई say I have 1792. ये 2 से कितना दूर है? 2 min लेंगे, इसके बाद min लेंगे तो आ जाए. ये 1 से कितना दूर है? Do I get 2 here? I do get 2. Edge case is not clear to me. What is the case that I'm stuck, man? It's frustrating. है. You see 1 and 2. That's right.
How do I find the broken test case? Okay, let's learn about um, stress testing today. That will be a good thing. ये 25 हो जाएगा कर देना. Almost exhausted my time. 25 होने में 3 मिनट और उधर 5 मिनट 8 minutes.
I'm asking Gemini about the process of finding failing test cases. Yeah. What is it? Okay, okay, okay. So, okay, so first of all, I should have the brute force handy so that I know I can generate the test cases for sure, right? So the brute force would be for every pair. I'm assuming कि जो भी बचा हुआ है वो already set है, but can be a different number, right? Hmm. Understood the problem, but
We talk about this particular scenario where my code would fail because in this range they are not close or anything. No one is related, but this range can give me a number that is equal to 12. So for every segment, I'm getting the min max thing, and this segment can collapse into a number, and we can just the immediate number, that is you can bring any number that is if it's the immediate number after the segment, that is like j, the current j will be starting from every segment. Yeah, getting the segment length, min max and stuff, and a possible range we will get, and anything that is within this range can be matched. Okay, so there won't be a situation where I equals to j. This is the range min max. Now in this range everything is collapsed, and just the element after it can be used. Now when I got the segment, I just want to get the numbers ahead of it, right? And as we move, the element just behind me was so 1 and 1 can be the segment, right? Yeah. So
ai will be the same number, vj will be the same number. Okay, now min and max are the same, so okay, we can just fix it and move in because j can be a distant thing. J can be a distant thing. As we have j, we just update the thing to to n. J starts from n. En moves forward, and for every distance we have a new range, and I and j is the full element. Then who are we updating the range for? Who do we match? So I think this will be less than n minus 1. It will stop at a position. If say if j is the last thing, and we don't compare, we don't have anything to compare it to, right? If I is less than n, yeah, whatever j, and with the just element that is ahead of the segment, right? If j is less than n, then it will be at n minus 1, and after n minus 1 we don't have anything to entertain for. So if j is less than n minus 1, then we can set a next element that is here j plus, right? You can set it to n minus 1 because I is at the last thing and j is ahead of it. Makes no sense. But they are if good numbers, then get this range, okay, and get this range. With this range is something the next wants. If the element is one more the range or one less than the range, you can accommodate it, and
Then between the range can be accommodated. Okay, so नेक्स्ट को 0 रखते हैं या -1. फिर नेक्स्ट रख लिए. Next is you can set next to be one more than if it was 21. But I've got it. Next is less than equal to max plus 1, and next is more than equal to min minus 1. Then we have a valid thing. That means this next element. Then what we can do is date distance any equals to min of the distance. The segment को compress करने में कितना टाइम लगेगा? तो 0 है और 1 है, तो mini of mini j minus I, क्योंकि ये है 0 और ये है 1. तो इसको कंप्रेस करके एक एलिमेंट बनाने में पहले एक स्टेप ही लगेगा यहाँ तक कंप्रेस करके एक एलिमेंट बनाने में. 0 1 2 एक स्टेप में ही कंप्रेस होगा और एक स्टेप में. ठीक है, एक 2 3 4 5 देखते हैं क्या सीन है.
Let's see this works. आजा 0 minus 1 0 minus 1 1 एक स्टेप में हो जाना चाहिए, ये भी एक step में। चलो सबमिट करके देखते हैं। पता नहीं, शायद maybe it work. This also failed. I think I need the solution right now. I messed up somewhere and going in a good direction. Wasted around 100 minutes. This guy makes big problems. So let's check if the given array is already beautiful. If it is, then answer is obviously 0. Otherwise, it means that A or I for all I, and we need to perform at least one operation. Next, note that if there is at least one local extremum in the array, that is, there exists a position I such that I minus 1 is less than A I, and yeah, it's like a peak or like a trench, and without loss of generality, I minus 1 is, then we can in one operation transform the pair A minus 1 number X, that is, make the array beautiful. In other words, the array other than there are no local extremum in the array, it means that the array is sorted in either descending or here we can observe that there is no solution or cannot decrease the distance between the solution. So the solution to the problem is as follows: if the array is beautiful, the answer is 0. Otherwise, if the array is sorted in any order, the minus 1. Otherwise, the answer is 1. I figured out. समझ में आ ही गया था कि ऐसा होगा, बट थिंक ऑफ कि ऐसे करने से भी इट वाज अ dumb attempt to just check for the stuff.
Nothing clever in this. Matlab, yeah, this is clever, but you have to think. You didn't have to do so much in a 1100 threaded problem. If else चलता है इसमें, क्योंकि एक बार में हो जाएगा. 2 3 नेवर कभी नहीं है. 2 3 Let's submit this. This can be done a simple manner. Then why to bother too much? Yeah, got accepted. Took me 10 minutes. Got all fired up, thinking what I was doing is correct, but okay, I will take a short break and then same thing. Increasing decreasing order में if I want to, yeah, पहले चेक कर लो कि वैसा है या नहीं, बट वैसा नहीं है फिर एक ऑर्डर में, तो then they cannot be done anything. The rest everything can be done. Okay, 10 minutes break.
Okay, I'm back. Oh, I spent around 50 plus 25 minutes. That is around 75 minutes, 1 hour 15 minutes. On this. Okay. This was not a good performance, but yeah. Let's move to the next one. We start with the integer array A. Okay, input is n, and okay, and length of array B, n integers. Okay, then we have the array that is will be 0 to n. Regional constraint on the input. There exists at least one way to choose L and R for each action and reorder the elements. And A becomes equal to B. Okay.
What is the problem? You start integer a, which initially you have n zeros. You have this is the array. You have to perform the following action exactly n times. Exactly n times what? Choose two integers l and r and assign a equals to a plus 1 for each I that l and such that I is l से r तक सबको 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ाना है। सबको +1 से बढ़ाना है, सबको +1 बम्प अप कर देना है। बेसिकली सेगमेंट का हाइट ऊंचा कर देना है। एंड you are given an array b consisting of n integers. The task is to choose such values l and r for each action that after n actions are performed, it's possible to reorder the element in such a way that a becomes equal to b. The maximum value of r minus l plus 1 over all actions is as large as possible. The maximum value of r minus l plus 1 is for action is as large as possible. Okay. After n actions performed, it is possible to reorder the element in such a way after performing n actions. After actions are performed, is it possible to reorder the elements? मतलब maximum value of r minus l plus 1. What is the maximum possible value of r minus l? This test contains multiple test cases. The first line consists in the number of segments. T n array b. ठीक है, अब 05101 है। एन ऑपरेशन करने के बाद भी सेम रहे, ये चाह रहा है, तो एन ऑपरेशन करने के बाद भी सेम रहे। Consider the first test case. If n actions were as follows: L or R as a 3 1 3 3 3 3 3 3 3, so the array will become one 3, that is थ्री मतलब एक एलिमेंट।
1 2 3 3 को 1 2 3 4 बार उसको 5 कर दिया, ठीक है। बाकी दोनों कम कैसे हो गए ना? 1 3 1 6 1 1 6 2 So this is the thing. I don't understand the process, what's happening. L चूज किया गया and R3 L3 या R3 है, then it will increase 2 हो जाएगा। उसके बाद L1 R3 तो वो हो जाएगा 1। अच्छा, एनीथिंग अबव नो मॉड्यूलो हो जाता है, 6 हुआ तो 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 हुआ तो 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। बाकी दोनों
प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही बहुत एम्बिगियस है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, you have n zeros initially. ओके, और उसको फिर b के बराबर बनाना है. So if I have n zeros, that is 1, 2, 3, 4, 5, and I want to make it to like this. So what I can do is एक बार, हाँ, 0 0 1 1 5. तो वी कैन एक स्टेप में तो हम लोग इसको, ये पूरा सेगमेंट को हाई कर सकते हैं, देन इसको फिर पकड़ के उठाओ. ओके, वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन बेस. ग्रेट, सॉर्ट कर दो. ठीक है, सॉर्ट कर देते हैं. 1 1 5. तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हुआ. यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके एंड तक इसका कोई काउंट नहीं है क्योंकि कुछ रेज नहीं करना होगा. तो स्टार्ट फ्रॉम 1, ये एक बेस हुआ, फिर 5, आई थिंक 1 ही सिंपल है क्योंकि फिर मान लेते हैं सब एक साथ इंक्रीज हुआ है अप टू करंट, बट वो तो लार्जेस्ट है ना. फिर 5 से लेके मान लेते हैं समथिंग इज 9 एंड 11. तो फिर 5, जब तक 5 नहीं हो जाता, चलता तब तक 1 नहीं हो जाता, ये करेंगे. डेफिनेटली इट विल बी शॉर्टर. तो पहला 1 जहाँ से मिलता है वो लेंथ चाहिए होगा. ये सब 1 है, एक बार उठाना होगा. तो पूरा सेगमेंट को सॉर्ट करते हैं 1 2 3, एंड पहला 1 यहाँ मिला तो 1 2 3. तो r होगा 3 पे, 1 होगा +1 2 +1. अगर 1 1 1 1 है, सबको पकड़ के एक साथ उठा सकते हैं. तो लेफ्ट राइट, और दिस इज 1. मैक्स सेगमेंट 1 क्यों है? क्योंकि why there is no explanation for this kind of things. अगर we have a request for such thing, 5 ones, then to start with an empty array, okay, n zeros, it will perform the following exactly n times करना, 1 बार नहीं कर सकते. तो देख, zeros को you have to skip. Here you have to make sure you have exhausted all
the things, right? So how do I make sure of that? यहाँ पे 00115 how many steps it will take? हाइट डिफरेंस जितना है उतना स्टेप 5 स्टेप्स लगेगा मैक्स वैल्यू जो है ना उतना स्टेप्स तो लगेगा, और मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट भी करना चाहिए। मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, तो जैसे मान लेते 3 है अगर मेरे पास, तो 11113 या मान लेते 00, इसी केस में 00113 है, देन टोटल स्टेप्स 3 होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसको एक बार बढ़ाएं, इसको दूसरी बार बढ़ाएं, और इसको 3 बार बढ़ाएं, तो ये 5 हुआ, और ये अगर 2 हुआ तो there exists at least one way to choose element so that each actions regard to the element. मैक्स अगर नहीं एग्जिस्ट करता देन एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको चूज कर सकते हैं एक बार में सबको हाई करने के लिए, एक इक्वेशन हो, फिर 2 3 एरे 3 था, मैक्स से जितना छोटा उतना डिफरेंस करना, माइनस करना होगा, 3 - 2 1, ठीक है। इसमें लेंथ था 5 माइनस मैक्स से जितना छोटा 1, ठीक है। तो द फॉर्मूला इज मैक्स माइनस मैक्स अवेलेबल, ठीक है। जैसे कि 5 - 1 और proposed लेंथ, ठीक है, ये फॉर्मूला है। शुड आई इन्वेस्टिगेट? नो, दिस इज प्रूवन, क्योंकि मैक्स अगर छोटा होगा तो यू हैव टू, जैसे देयर इज एटलीस्ट वन वे होने के लिए, तो इट इज इनवेरिएंट दैट सारा का सम मिला के वो हो जाएगा, स्टेप्स आर कंजर्व्ड, 5 कवर हो जाएगा। तो अगर मैक्स से कम है तो बाकी दे विल नीड वन और द अदर वे टू फिक्स इट। तो जैसे मान लेते 01112 है, तो वही तो एक साथ करेंगे तो एक स्टेप हुआ, फिर 2 स्टेप हुआ, सो 1 2 3 ये, फिर 4 5 करना होगा। टोटल सम मैक्स के बराबर हो गया, हाँ। और मैक्स से ज़्यादा हो गया तो देन 1 2 3 4 एक बार कर सकते हैं, देन वी विल हैव हाउ मेनी स्टेप्स मोर, 2 स्टेप। ये कितना ज़्यादा था, मैक्स से 1 ज़्यादा ना, तो प्रपोज्ड लेंथ था 4 - 1, इसको कर सकते हैं एक बार में, इसके बाद इसको 3 बार में कर सकते हैं, दैट विल बी 4। आई वांट 5, तो एक बार में किए, फिर एक बार में किए, फिर एक बार में किए, 4 हुआ, 5 6,
1 2 3 4 5 एक साथ किया ना, तो एक स्टेप, 2 स्टेप, total proposed length ये है. Things are if it's more than the total से कम हो सकता है. जिस sum में it can be less than total, sum can be more than total, sum can be equal to total. ठीक है, जिसका मतलब है एक ही एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि 1 1 1 1 2 सम सेम है. उसके बाद ठीक है, in this case I have 1 2 3 ऑपरेशंस और यहाँ पे टोटल मेरे पास 7 ऑपरेशंस है. टोटल 7 ऑपरेशंस है विच आई कैन क्लब. क्या हम 4 क्लब करना अफोर्ड कर सकते हैं? 2 ही क्लब करना अफोर्ड कर सकते हैं. दो क्लब किए, फिर एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन. बाद how many operations we can club? 3 operations. Total sum 7 है. I want to reach 5. So there are 2 elements to spare. Maybe there are 2 elements or something is 2. So sum is not a reliable way to decide. I can see एक के साथ 2 ऑपरेशन वेस्ट करता हूँ, तो बाकी 4 ऑपरेशन संभल जाएगा. एग्जैक्टली 5 है, तो यहाँ पे मैक्स 3 था. एग्जैक्टली मैक्स 1 का ही होगा. 4 है, नॉट पॉसिबल. कम छोटा नहीं हो सकता ऐसा. तो अगर वैल्यू ज़्यादा है जैसे कि ऊपर वाले में 00115, तो 5 है. You have the largest number, then it can handle all the operations because you have more to spare, right? ये सिंगल 1 है, एक ऑपरेशन में ख़त्म हो जाएंगे, तो you don't need to care about them. तो लार्जेस्ट नंबर जो है उसको फुलफिल करते करते नीचे का सारा हो जाएगा ख़त्म. तो ऑल डिपेंड्स ऑन द लार्जेस्ट नंबर. अगर 5 है मेरे पास, इट्स द मैक्स पॉसिबल नंबर, तो सब एक साथ भी ले लेते हैं नीचे का, everything that I have, and still I will have 5 operations. But if the max number is 4, okay, if the max number is 4,
एंड यू सी कि अगर नीचे का सारा ऑपरेशंस एक साथ कर ले एंड वी बैच देम, देन वी विल हैव अ हाइट ऑफ 4. वी डोंट वांट दैट. वांट अ हाइट एग्जैक्टली 5. हम क्या करेंगे कि लोअर लेवल्स पे जहाँ मैक्स विथ होता है लोअर लेवल्स पे, उस मैक्स विथ में आई विल ट्राई टू गेट वन मोर स्टेप फ्रॉम देयर. वही तो मैक्स और मैक्स अवेलेबल जैसे 4 था, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्टेप्स आई नीड, एक्स्ट्रा स्टेप्स आई नीड. तो प्रपोज लेंथ अगर मैक्स लेंथ 4 है तो उसमें से एक्स्ट्रा स्टेप्स सिंगल सिंगल करके भी निकाल सकते हैं. और मान लेते 2 से भरा हुआ है तो डजेंट मैटर ना, डजेंट मैटर, क्योंकि 2 से भरा हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि this can handle 2, this can handle 2, this 10 steps है, max of 4. then सब एक साथ भी ले लें. मैक्स विथ एक बार के बाद उसके, if I think of it 1 1 1 4 था, सब एक साथ ले लेते हैं तो स्टिल फिर एक एक बार लेके ये 3 प्रोड्यूस कर पाता. बट मैक्स विथ मेरा प्रपोज लेंथ होगा 1 2 3 4. 10 में से 4 भी निकाल दें तो आई हैव स्टिल 6 टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस, राइट. तो इट इज पॉसिबल. proposed length I have a proposed length and as a sum है total steps जो सिंगल सिंगल लेके कर सकते हो. तो sum minus total length is more than n minus 1, more than or equal to, then see out proposed length, because we can do it. Else sum can be equal to proposed length and sum can be less than proposed length. ठीक है, अब देखते हैं if sum is equal to proposed length, then if sum is, then I have 0 1 1 this. ठीक है, sum बराबर हो गया, proposed length है मेरा 4, proposed length मेरा 5 है, sum भी मेरा 5. तब तो एक ही स्टेप लेना होगा. ठीक है, अब प्रपोज सम है मेरा 5 एंड विच इज मोर देन प्रपोज लेंथ विच इज 4. इसका मतलब है -4 करेंगे, एक बचेगा नहीं, नॉट पॉसिबल. तो क्या कर सकते हैं, ये हम ग्रुपिंग का साइज कम कर सकते हैं. एक एक्स्ट्रा बच रहा है, बट हाउ मेनी एक्स्ट्रा डू आई वांट. आई वांट कम से कम 4, दैट इज इक्वल्स टू n minus 1 extras. तो proposed length, it is 4 minus extras.
How many extras do I want? n-1 मतलब लेंथ लेने के बाद होना चाहिए। प्रपोज लेंथ 1, ठीक है। तो how many extras do I want? I want 4 extras। और जहाँ तक ऑपरेशन है ना, प्रपोज लेंथ इज an operation in itself, so तो छोड़ के उतना ऑपरेशंस चाहिए। तो n-1 ऑपरेशन 4, और कितना एलिमेंट्स बच रहा है? Max height is what matters। ठीक है। But in this case, I want 4 more operations to be done। My proposed length is 4। तो ये बोल रहा है कि या टू टेक 1, एक एक करके लेना होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर इसमें अप्लाई करें कि सम है मेरा 7, ठीक है, एंड प्रपोज्ड लेंथ है 3, बचता है 4। Am I satisfied with 4? ओके, तो 3 कैन बी डन। यहाँ है प्रपोज लेंथ 6, प्रपोज लेंथ 3 है, सम है 6, 3 बचता है। Am I okay with 3, which is 3 minus 1, 2? हाँ ठीक है, 3। प्रपोज लेंथ है 1 2 3 4 5, 5 and sum is 5, 5 minus 5, 0। Want is 4, 0 is less than 4, so not okay। एक एक लेना होगा। 1 और 2 में एक एक लेना होगा। से I have 1 1 4, this thing। Then 6 is the length, proposed length। 3 is the proposed length and sum is 6, 6 minus 3, you have 3। is 3 acceptable? क्योंकि ऐसे ले तो 5 करना होगा, तो 1 2 4 चाहिए, नहीं होगा, 3 एक साथ नहीं ले सकते फिर। दो एक साथ कर सकते हैं, ये 2 कैसे लाएंगे? तो 2 कैसे लाएंगे? Need is 4। I have a length of 3, need is 4, इसको x बना देते हैं। 6 minus x equals to 4, 6 minus 4 equals to 2, done। सही। 6 is sum, 4 is need, that is n minus 1। सम करो टोटल का एंड नीड से माइनस कर दो, तो 7 minus need is 4, 6 minus need is 2,
4 आ रहा है। 6 माइनस नीड जो कि 2 है। नीड 2 है क्या? मेन ऑफ तो 4 लेंथ बनाने का इजाज़त है तो वही। इसके बाद सम है 5, नीड है 4, 1। Need a 4. Okay, let's code it up. I have the array. I can do a sum. I can do a sum here. Okay. Sum equals to 0. And now need is -1. So available equals to and we can print the minimum of what is the available length we can take, and 1. So avl comma we can do active elements, non-zero elements. Available and other thing that non-zero elements basically. एलिमेंट्स होगा ही नहीं तो let's see and hope this works. सबमिट करके देखते हैं if this works. 1100 में it's almost like 1100 तो इतना टाइम तो नहीं लगना इसमें, but देखते हैं this works. Then I'll just end the stream here. Yeah, it worked.
accepted. And 1301 I will solve later, not on this stream. I'm feeling I think I should do the stream. I'm not feeling at top of my productivity, so I will do the 1301 later and write all the metacognition for all of these. And yeah, that's it. See you in the next one.